ऑल मॉडल्स आर रिप्लेसेबल, उन सबको इससे चलाया जा रहा है। क्या तूने एक रिप्लेसेबल मॉडल बनना है या वो इंसान बनना है जो इन्हें रूल करता है? इनका लाइफ स्पैन 10 से 15 साल का ही होता है, उसके बाद पता नहीं है, लाइक व्हाट ऑल सप्लीमेंट्स क्या क्या ठोक रहे हैं ये लोग टू लुक यंगर, बी इट बोटॉक्स और समथिंग। उनकी तो पूरी मार्केटिंग टीम्स, कैंपेन्स, 15 25 30 लोग बैठ के सोच रहे हैं डीप थिंकिंग, अच्छा किस टाइम पे कैसा ऐड चलाना है, कौन किस टाइम पे टारगेट करना है। यो गाइस, नमस्कारम। So, Debu ki Dastak is a platform where we talk on mental health and a lot of other sensitive issues, right? So basically, the entire aim of this channel is to build a community around sensitive issues and make people feel comfortable about themselves. So basically, if you're new here, consider subscribing. Our mission is to empower you with ideas to live smartly and joyfully. The world is full of suffering, but let us increase our competence to deal with things joyfully. And just a tip, so all these are basically conversations, so I might suggest that you should watch these conversations at 1.5x. You can increase the playback speed through the button in the settings. Cheers and enjoy watching. Okay, yo guys, namaskaram. So एक और प्रॉब्लम आई है मेरे पास लेटली एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग है बिकॉज आई वांटेड टू टॉक अबाउट दिस स्पेसिफिक थिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम एज वेल। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सो द प्रॉब्लम इज लाइक a girl reached out to me and she says that she feels insecure about her looks. She feels she's worthless and उसे लगता है कि वो कम है दूसरों से, एंड कहीं ना कहीं लाइफस्टाइल में एक डर है कि यार कोई शादी करेगा या नहीं, मैं बहुत गंदी लाइक उस ट्रैजेक्टरी में थोड़ा लुक्स की ट्रैजेक्टरी में, दोस काइंड ऑफ थिंग्स। ठीक है, सो फर्स्टली थोड़ा लाइफस्टाइल पे बात करते हैं। तो आजकल आई एम अज्यूमिंग यू यूज अ लॉट ऑफ सोशल मीडिया पर से, ठीक है। अब दिक्कत क्या हुई तेरे साथ कि सोशल मीडिया पे ऊपर से लेके नीचे तक, लेफ्ट से राइट, आपको दिख रही हैं गर्ल्स विद बिग boobs, let's say girls with big ass, like over in large breasts and those kind of things, ठीक है। एंड देन जब आप नीचे जाते हैं कमेंट सेक्शन में, आप देखते हैं लॉन्डे डेस्परेट की तरह कमेंट किए जा रहे हैं, hot, this, that, oh, you look so gorgeous. कई बार some girls also maybe comment like who are their true fans, some blue, like जो भी blue ticks वाले account होते हैं, ठीक है। Now, please understand the reality that you are being shown perfect models all the time. हालांकि किसी को पता नहीं है परफेक्शन क्या होती है, बट ऊपर से लेके नीचे तक, एक वो स्टैंडर्ड इमेज है हमारे दिमाग में, परफेक्शन की इमेज। एंड अनकॉन्शियसली क्या होता है, आसपास वाले भी क्योंकि यही चीज़ें कंज्यूम कर रहे हैं, राइट, दे आर ऑल ऑन सोशल मीडिया। सो वो सब देखते हैं, ये एक परफेक्ट स्टैंडर्ड है, तो क्यों नहीं है ऐसी, एक अनरियलिस्टिक इमेजिनेशन से, लाइक दे काइंड ऑफ लिंक यू इन वन सेंस कि यार तेरे को भी ऐसा दिखना चाहिए, नहीं तो तू कम है। एंड कहीं ना कहीं आपने वो फीलिंग इंटरनलाइज कर ली है, ठीक है। एक और बहुत बड़ी चीज़ ये आती है। सो जितने भी मॉडल आप देखते हो, ठीक है, 5-10 साल पहले कौन से मॉडल्स थे, डू यू रिमेंबर, लाइक इवन हैंडफुल ऑफ नेम्स, लाइक ऑल मॉडल्स आर रिप्लेसेबल, उन सबको इससे चलाया जा रहा है। लाइक एनी पर्सन कैन हायर देम फॉर अ लिमिटेड अमाउंट of time for their services, and then they can bloody replace them. Like it's not a long term relationship, where like the person is offering genuine services to impact value or create hope, or let's say those kind of things in the world. It's like a 10-15 year body based relationship, ठीक है। So my question to you बहना is कि क्या तूने एक रिप्लेसेबल मॉडल बनना है या वो इंसान बनना है जो इन्हें रूल करता है? इनका लाइफ स्पैन 10 से 15 साल का ही होता है, उसके बाद पता नहीं है, लाइक व्हाट ऑल सप्लीमेंट्स क्या क्या ठोक रहे हैं ये लोग टू लुक यंगर, बी इट बोटॉक्स और समथिंग, ठीक है ना। सम ऑफ यू माइट से ठीक है क्या फर्क पड़ता है, अभी शॉर्ट टर्म में तो एंजॉय कर रही है ना। इनफैक्ट यू हैव टू लिव लाइफ फॉर अ लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म में इनकी लाइफ अच्छे से लगती है क्योंकि for their entire life what they have done is they have just sold subtle sex messages in the form of their bodies। कोई कैरेक्टर डेवलपमेंट नहीं है, कोई एथिकल डेवलपमेंट नहीं है, कोई मॉरल डेवलपमेंट नहीं है, लेट्स से लेकिन परसुइंग जेन्युइन परस्यूट्स इन लाइफ, कोई टैलेंट और डेवलप नहीं किया, बस बॉडी बेच रहे हैं अपनी, ठीक है। सो even like there are proper scientific research studies wherein there are life threatening diseases
and a lot of other things which occur to these models due to increased use of such supplements and botox and those kind of things, ठीक है. अब अपने आसपास रियल लाइफ में आप क्या देखते हैं, लाइक इज इट रियली पॉसिबल टू अचीव सच हाई स्टैंडर्ड्स? क्या एक फैमिली है वो मर रही है क्या, ओ यार, मतलब बच्चा अपनी मम्मा बोल रहा है ओ यार आप मॉडल जैसे नहीं लग रहे, इट्स बुलशिट, राइट? like in reality families, or let's say life, generally just goes by on a normal decent human level. ऐसा नहीं है कि कोई परफेक्शन बेच रहा है या कोई स्ट्राइव किया जा रहा है फालतू की परफेक्शन के लिए, ठीक है. आई थिंक फंडामेंटली स्पीकिंग, अगर आप अपनी लाइफ की यही सोच सोच के लगा रहे हो यार उन जैसा बनना है इन जैसा बनना है, लाइक kick all those people out. They are just selling you a perfect image which does not exist in reality, ठीक है. उन लोगों की, I'll give you an honest example. So like some of the people from my personal example, like I have a lot of these model friends per se, ठीक है. उन लोगों की genuinely जी फटती है कि मतलब धूप में ज़्यादा नहीं निकलना क्योंकि एक पिंपल आ जाएगा, ओ यार फिर कौन बुलाएगा शूट में, एंड दीज काइंड ऑफ थिंग्स, एंड देन दे स्ट्रेस ओवर दैट ब्लडी वन पिंपल लाइक फॉर डेज ऑन एंड, ठीक है. यार क्या हो गया, मैं ख़राब लग रही हूँ. मतलब उन्होंने अपनी पूरी आइडेंटिटी ही शरीर से जोड़ ली. एंड like from a spiritual terminology, like the body is the peripheral, like the most outer part of your thing. It's necessary to maintain it, have good, like have a just have decent standards around it, but ऐसा नहीं है कि अंधा ही बने जा रहे हो बॉडी के पीछे, ठीक है. एंड प्लीज अंडरस्टैंड दैट ये सिर्फ मॉडल्स की गलती नहीं है, लाइक देयर इज अ होल कॉर्पोरेशंस एजेंसीज इस पे चलती हैं, लाइक स्पेसिफिकली. अब देखो, लाइक प्रोडक्ट्स किसी ने कुछ भी बेचना हो, ठीक है, कोई सा भी चूतिया प्रोडक्ट बेचना हो, वो क्या बोलेगा, ओ यार आप कम हो, आप इनकम्प्लीट हो. लेकिन आप कंप्लीट कैसे होगे, जब आप हमसे ये प्रोडक्ट लोगे. तो उन्हें तो अपने पैसे बनाने हैं ना, राइट? लाइक उनकी तो पूरी मार्केटिंग टीम्स कैंपेन्स 15 25 30 लोग बैठ के सोच रहे हैं, डीप थिंकिंग, अच्छा किस टाइम पे कैसा ऐड चलाना है, कौन किस टाइम पे टारगेट करना है, कौन लड़की कब किस टाइम पे इंस्टाग्राम चला रही है, कोई भी प्लेटफॉर्म हो स्पेसिफिकली. So I think the most important thing is that life should not be just about sex, or let's say rather, like, just selling sex all the time subtly. It should be about more deeper pursuits in life. Like, are you becoming a good person in the process of life? Are you, like, genuinely being the most reliable person? Let's say, जब सबके आसपास party and you are that one person whom everybody can rely on, ठीक है? So I think one fundamental message for you would be that भाड़ में जाइए लोग जो आपको अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड्स सेल करते हैं. यू आर परफेक्ट जस्ट द वे यू आर, ठीक है. फोकस ऑन होनिंग योर रियल स्ट्रेंथ्स एंड योर रियल कैरेक्टर रादर देन कंपेयरिंग योर नॉर्मल रियलिटी, मंडेन रियलिटी टू समबडीज इमेज या समबडीज सेलिंग ऑफ परफेक्शन टू यू, ठीक है. क्योंकि अभी आपको लगता होगा यार मेरी रियलिटी ऐसी क्यों नहीं है उन जैसी, कूल जैसी. If you really work on honing your strengths and, like, just put your entire focus on your own being, you'll have a much richer and fulfilling life. Like, this is not what I say, this is what researchers which have been studying, like, life satisfaction for 40 to 50 years have been seeing in this statistic, eh? So I might say that, like, focus on developing real character from your heart and become a person who becomes the most reliable. I'm assuming that there would come a situation in your life, ठीक है, when you are faced with this choice of marriage per se, ठीक है. So usually कितना होता है, आपने पेरेंट्स में देखोगे, आसपास रिश्तेदारी में सुना होगा कि यार मतलब like females in generally, थोड़ी बुजुर्ग आंटियाँ, they are always just dependent on their men, and let's say अगर उनकी डेथ हो जाती है तो लेकिन एकदम clueless helpless से हो जाते हैं. So like, don't become a girl, think long term, don't become a girl who is just dependent on a bloody man for everything. Become your own independent person and then choose people from a long term compatibility या satisfaction level. इस लड़के के साथ या इस मैन के साथ स्पेसिफिकली यहाँ ऐसे एक स्क्रू बैठ रहा है, then I can have genuine long term satisfaction, happiness. Like, do you just want to serve a bloody man, yeah, let's say in this phase of marriage, just like, for your entire life, do you just want to serve to his needs or those kind of things, or do you want to become a confident and secure person? So I might say that just ignore all those unrealistic standards. What matters is how deeply you are kind of, like, honing your strengths and just developing your own character.
So let me know what you feel about this. This is just a small perspective video which I wanted to do. Anyhow, this is Debashish Pindra from Debukidastak signing off. Cheers. Just a couple of updates. So my website is live now. So you can go to www.debukidastak.com. There you'll find a lot of resources. I have my blog running there. I have my reading list for the years. If you have any suggestions, comments, I'll be happy to take that feedback in and improve, because I just want to build a community which is hell smart and just always living in the world of ideas and making things happen.